Hey guys, Assalamu alaikum. How are you all doing? I hope everybody is doing good. So today I'm back with my glowy makeup look for beginners. So let's get start the video. सबसे पहले मैंने moisturizer लिया because it's very important to moisturize your skin before doing any kind of makeup. As I'm doing glowy makeup, so it is very necessary to moisturize your skin. But if you are doing any kind of makeup, it is very important step no matter what the look is. So as you can see, I'm just applying the moisturizer all over my face, just like that. There is no technique to apply the moisturizer. You can apply it either any way, but yeah, I'm showing my way to apply the moisturizer. इसके बाद अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है इसको इस तरह से. Then I'm taking F36 from kraylon and I'm gonna use it as concealer to conceal my flaws on the face to look flawless. As you guys can see, I'm hiding my dark spots with this. आप लोग किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं until आपको पता हो कि हम लोग इस चीज़ को और कितने वेज में यूज़ कर सकते हैं. सो आई एम यूजिंग दिस. ये भी एक प्रो टिप थी, यू कैन नोट इट. उसके बाद मैंने लिया है F38 अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए. बट देन आई सी एंड डिसाइडेड आई एम नॉट गोना अप्लाई दिस ऑन माई फेस एज दिस इज मैचेस विद माई स्किन. सो आई एम जस्ट क्लोजिंग इट. एंड फिर मैंने ली है F45 and I guess yes, this is the good one. I'm applying it all over my face again. Like again, there is no way to apply, but if you're gonna apply this in this way, this might make a big difference on your face, on your makeup as well. Okay, so this is the way. Then I'm closing it. उसके बाद मैंने एक डैम्प स्पंज लेना है और इस तरह से इसको टैप टैप करके ब्लेंड कर लेना है ऑल ओवर माय फेस अगेन. इसको मुझे रब नहीं करना. ओके, आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट कि जिस तरह से हम लोग कोई चीज़ साफ़ करते हैं उस तरह से हमने ब्लेंड नहीं करना. बट द वे इज़ आई एम शोइंग यू द वे किस तरीके से आपने करना है. उसके बाद मैंने लिया है एक कंसीलर. टार्ट का ये कंसीलर है. ओके, तो इसको मुझे लगा लेना है अपने डार्क सर्कल्स पर क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं और आई होप कि आप सबको भी होंगे क्योंकि इट्स नेचुरल, बंदा कुछ नहीं कर सकता. तो इस तरह से आपने इसको कर लेना है ब्लेंड. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ. अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आप लोगों के लिए मेकअप करना आसान हो जाएगा. So I hope you guys are getting and noting down the tips I'm giving you. Trust me, it's gonna make a big difference in your makeup. सेम वे ही मुझे दूसरी आई पे भी करना है. और मैंने आई बेस नहीं यूज़ की स्पेशल बिकॉज आई एम ओनली डूइंग द डेली रूटीन मेकअप. सो उसमें आई बेस लगाने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद मुझे लेना है लॉरा मर्शियर का ये कॉम्पैक्ट पाउडर और ये मैं आपको ब्रश दिखा रही हूँ जिससे मुझे ये अप्लाई करना है ऑन माई फेस. और जी इस तरह नहीं खोलना था, इस तरीके से खोलना था. ठीक है, और जी अब मैं इसको लगा लूँगी, अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पर. ठीक है, मुझे कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा लगता है. इसको हम बेकिंग भी कहते हैं इन मेकअप लैंग्वेज. ठीक है, आई एम बेकिंग माई फेस. I love to bake. Either it could be a cake or makeup. I love to bake. इसलिए मैं अपना पूरा फेस ही बेक कर दूँगी एंड में आप लोग देखना. सो इससे भी बहुत अच्छी लुक आती है और इसी तरीके से ही आपने अप्लाई करना है द वे आई एम अप्लाइंग इट बिकॉज इसका एक ही रूल है. ठीक है, और इसको आपने फॉलो करना है. ठीक है, और अगर आपको कुछ ना समझ आए, यू गाइज कैन ऑलवेज आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल आंसर योर क्वेरीज, योर क्वेश्चंस, नो मैटर व्हाट. ओके, उसके बाद जी मुझे अप्लाई करना है
अपने ब्रो टेंट करने हैं, आईब्रोज़, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये इस वक्त वाइट हो रहे हैं, फाउंडेशन लग चुकी है इनमें, और मैं ब्राउन शेड लूँगी, ब्लैक नहीं लूँगी, ठीक है। ब्राउन लेना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं अप्लाई करना, नाइदर टू मच नॉर वेरी लेस इन अमाउंट के पता ही ना चले, ठीक है। थोड़ा सा इन मीडियम कैटेगरी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा शार्प नहीं आईब्रोज बनाने। आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आप लोगों ने भी सेम इसी तरीके को फॉलो करना है, ओके। सो यस, दिस इज़ द वे। और ये आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लें, ओके, क्योंकि ये जो होती है ना मेकअप की पूरी गेम होती है आईब्रोज, ठीक है। इसको आप लोग देख लें कि इसका क्या तरीका है, इस तरीके से आपने करना है। बहुत ज़्यादा शार्प आईब्रोज भी नहीं अच्छे लगते, और मैं आईब्रोज क्योंकि बनाती नहीं हूँ, ठीक है, तो नेचुरली हैं इसलिए वो ज़्यादा हैं, तो इसलिए ना मैंने बहुत ज़्यादा उनको फिल नहीं कर दिया, वरना वो टू मच लगते हैं ना, तो और वो फिर अच्छा भी नहीं लगता। और इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने ब्रश किया है आईब्रोज़ को, ठीक है। ये भी आप लोगों ने नोट करना, और इससे देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है अभी से ही। उसके बाद आई एम टेकिंग नोटी पैलेट फ्रॉम हुदा, और उसको वापस रख दिया है क्योंकि मुझे अभी वो नहीं यूज़ करनी थी, ठीक है। आई एम गोना यूज़ द नोटी पैलेट फ्रॉम हुदा बट नॉट राइट नाउ। अभी मैंने लिया है गब्रीनी का हाइलाइटर, एंड आई एम गोना पुट इट ऑन माई इनर कॉर्नर्स ऑफ आईज because we are creating a glowy makeup look, so don't hesitate to apply the direct highlighter on your inner corners because it will give you an amazing look. Like I don't even right now I can't even tell how much it gonna give you the flawless and amazing look, but after using it, after trying this, you guys will be amazed to see the difference it could make. Okay, so after applying it, let's move on to my favorite step, the eyeshadow step. This is my favorite part of the makeup. I'm taking a naughty palette from Huda Beauty, and I'm applying pink, something of pink and brownish tint on my eyelid only, and you guys can see the difference it makes. And now I'm gonna show you the color which I'm using. Yeah, this is the exactly what color I was talking about, and this definitely gives you an amazing look. Like, please give it a try and you guys will amazed to see the difference it could make. After applying that, I had applied a little bit of golden tint on my eyelid, but I don't know where it went. Video is discarded by my phone automatically, but I'm really sorry for that, and I'm really sorry for inconvenience. Now I'm applying the eyeliner. As you guys can see, I'm applying aqua kraylon's liner. This is the way of applying it. You guys can apply in your own way of eyeliner. There are lots of ways to apply eyeliner. There is no any particular rule to apply. So yeah, please never ever hesitate to do your own makeup. Just start doing it. Just start doing it like you are painting something. और ज़्यादा क्या हो जाएगा, just start it. But here I'm applying a mascara because I love mascara as well. You guys can curl your lashes, you guys can put your lashes on, but I'm not putting lashes right now because this is very like natural makeup, so there is no need to apply eyelashes. Now I'm gonna apply mascara on my under lashes. Yeah, this is the mascara which I'm using it. You guys can see how thin this is not too thick. It just removes the whiteness which caused by the foundation I have used. So yeah, this only removes that, not giving that a typical black shadow, but yeah, this is okay. So now I'm gonna apply, I hope, your favorite step of makeup. Yeah, everyone's favorite step of makeup. I'm gonna apply contour. I'm contouring my face. You can contour in this way as well. If you have make a face, your face shape like me, you can apply in this way, but you guys can always
tell me the shape of your face in the comment section. I'll definitely rate them. I'll definitely make a video on them. Now I'm contouring my nose. I love to contour my nose, despite I have बकौल अम्मी के पतली नाक, but still I love to contour my nose. Okay, so this is the difference. You guys can check. इससे पहले नाक देख ली थी आप लोगों ने और आप देख लें. ओके, दिस लुक्स अमेजिंग. इस तरह से आपने पूरे फेस पे, पूरी स्क्रीन आपके सामने है पूरे मेकअप की, आप लोग उस पर फोकस करें, अच्छी तरह से देखें और साथ सुन भी सकते हैं कि किस तरह से मैं कर रही हूँ. बट ओके, सो नाउ आई एम अप्लाइंग द ब्रॉन्जर. Okay, so this is the way I'm applying it in uplift direction. I'm not putting it downward. You guys can see this is the way of applying the bronzer. So yeah, you can apply it in your nose as well. After this, what I'm taking, I guess I'm taking a blush on. Yes, I'm using Fit Makeup blush on, and trust me, this is amazing. Wow. Okay, so I'm also putting my blush on in upward direction. I'm not making a apple cheek. आप लोग देख सकते हैं मैं बिल्कुल सेंटर में अपनी चीक्स पे नहीं अप्लाई कर रही. मैं सिर्फ uplifting my cheeks. इससे बहुत अच्छी लुक आती है और वो टिपिकल एक जो होता है ना, बहुत ज़्यादा चीकी चीकी मेकअप होता है, वो नहीं लगेगा और इससे अच्छा लगेगा. सो या, दिस इज़ द वे. You guys can try it at your home और उसके बाद आप लोग इवेंट्स पर करके जाएं. बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि नेक्स्ट लुक आपको कौन सी चाहिए, और अगर आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, अगर आपको मेकअप पसंद आया है तो आई वुड लव टू हियर दैट. उसके बाद आई एम यूजिंग गबरीनी का हाइलाइटर. ओके, सो दिस इज़ द वे. मैंने थोड़ा सा पानी लगाया ब्रश पे और उससे मैं अब अप्लाई करूँगी और आपने देखना है कि इससे कितना अच्छा डिफरेंस आता है हल्का सा वेट करने से ब्रश. ओके, सो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर कितना अच्छा हाइलाइटर लग रहा है. ठीक है, कोई भी हाइलाइटर हो आपके पास, आप लोग इस तरीके से इस्तेमाल करें. और क्योंकि मेरा फोरहेड बहुत छोटा है तो मैं इस तरह से हाइलाइटर लगा रही हूँ. ठीक है, जिसका भी मेरे जैसा फोरहेड हो या मेरे जैसा फेस कट हो, वो इस तरह से हाइलाइटर लगा सकते हैं. बाकी आपको पता ही है कि हाइलाइटर चीक बोन्स पर लगाया जाता है. ठीक है, और बाकी एरियाज़ आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैं लगा रही हूँ. और सेम ही वे दूसरी साइड पर भी मैं लगाऊंगी हाइलाइटर. दिस इज़ द सेम वे. ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंस. इसी तरह से ही आई एम गोना अप्लाई इट ऑन माई नेक्स्ट साइड एज वेल. ओके, अगेन आई टुक द नॉटी पैलेट फ्रॉम हुदा ब्यूटी एंड आई एम अप्लाइंग द पिंक शेडो ऑन माई अंडर आइज. As I didn't use the black, nude or white pencil on my waterline, I'm gonna use this instead and it will look amazing. You guys can see कितनी अच्छी eyes लग रही हैं after applying it. I didn't even use eye lenses, neither eyelashes. This is very natural makeup. कोई भी कर सकता है इसको. यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, अगर आपके कॉलेज में अलाउ है तो ठीक है. उसके अलावा अगर आप लोग जॉब करते हैं, ऑफिस गोइंग वुमेन एज वेल. ओके, सो नाउ आई टुक द लिपस्टिक and I'm applying very natural shade. I'll go with the pink. You guys might go with the red, any kind of type of brown or peach, no matter what, but I'm applying the pink as I like pink so much. I don't know why, but yeah, I always use pink lipstick. Okay, so this is the way. I hope वीडियो पसंद आई होगी. इतनी मेहनत करने के बाद इतनी थोड़ी सी शौकी तो एंड में बनती है ना. सो या, दिस इज़ इट. आई होप यू गाइज लाइक इट. मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सामने मेकअप करके. बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.